Hello students, welcome back in the next part of discussion that we have today, present perfect tense and its uses. So let me clear you that what is present perfect tense. So some statements has written here, for some groups of words to express an action that has just been completed. It means that जो कोई एक्शन जो अभी भी पूरा हुआ है, जस्ट रिसेंटली द एक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड, जो अभी भी जो एक्शन पूरा हो गया है तो उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं. तो नाउ हैव अ लुक अबाउट इट्स यूजेस. इनके यूजेस किस प्रकार से हैं, लेट अस फाइंड आउट. सो हियर सम ऑफ द एग्जांपल दैट आई हैव रिटन हियर. So first we have positive statements. He has just left. He has just left. How do we identify whether it is a present perfect tense or not? So at first we have in the pronoun form which is stand as a subject. He subject has verb, that means helping verb, and left is the V3. See, here is just is used. Why it is so? Because in order to identify that the recently just a little while ago some action has been completed, just little while ago. So therefore we have, so in that respect that we used, हम लोग प्रयोग करते हैं just का. जो कोई चीज़ अभी भी कोई भी काम खत्म हो जाता है, तो अभी भी जो भी काम खत्म हो जाता है, टू रिप्रेजेंट विथ सच वर्ड्स, जस्ट वर्ड लगाकर हम लोग अभी भी काम का खत्म होना जो कि प्रेजेंट में हुआ, जो लिटिल वाइल अगो में खत्म हुआ, तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो फॉर द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, what should be there to identify? There should be a subject, as well as according to the depends on the subject, helping verb will come, has or have, maybe there is just can be used, plus V3. Now let's see to the second example. He has not left yet. He has not left yet. He is subject, has verb, left V3. This not is telling about the negative statements. So it is a negative statement, and like I said, has or have depends on the subject. If it is singular form, has will come, otherwise have will come for the plural subject. And yet is used, that means something is here. He has not left yet. यहाँ पे ये that is particular talking about the particular persons, जो कि वो अभी तक गया नहीं है. He is still there. That's why the verb or the action, it is yet to be finished. It is finished, but it is telling something that the particular person has not gone where he had to go. जहाँ पर उसे जाना चाहिए वो अभी तक गया नहीं है. That's why ये yet डालने से इससे ये मालूम चलता है कि वो something is done just recently ago, जो अभी भी खत्म हुआ है. तो that's why it is a present perfect tense. In an interrogative sentence, here, have you heard from father? Have you heard from father? It's a interrogative sentence. So for the interrogative sentence, verb, helping verb will come first, then subject, heard is V3, which is your main verb, and rest of the words that is stand for the object. So here, have or has, it depends on the subject.
plus subject plus V3 and that's. So for the interrogative sentence, the always the helping verbs will come first. So here it is telling something which is just recently ago, or you can say a little while ago something is done, जो अभी भी कुछ समय पहले हुआ है, but not for a longer time, just recently it is done, जो अभी भी हुआ है. तो that's why this is called the present perfect tense and its way of using. And second way of using is of present perfect tense. It is also used to express an actions completed sometimes in the past but linked with the present. The action in the past has a result now. So here it is little different. It is also used to express. ये कोई action जो completed sometimes in the past, यानी कि past में वो चीज complete हो जाता है, past फॉर्म टाइप में वो हो जाता है, लेकिन वो प्रेजेंट को लिंक करता है, यानी कि प्रेजेंट को वो जोड़ देता है. तो द एक्शन इन द पास्ट हैज अ रिजल्ट नाउ, और वो ही पास्ट में हुआ हुआ जो भी एक्शन होता है वो उसका रिजल्ट प्रेजेंट में देता है. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट एक्सप्रेस द एक्शन कंप्लीटेड समटाइम्स इन द पास्ट बट लिंक विद द प्रेजेंट. सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मोर, just have a look some of the examples that I have written here. I have taken my breakfast. That means the person has already taken his breakfast and now he is not hungry. यानी कि वो अब भूखा नहीं है, उसको भूख नहीं लग रहा है. Why it is so? I think maybe someone is offering him to have breakfast, but it is he has already taken the breakfast just little time ago. Little, you can say that little while ago he has already taken. That's why it is something that he has done already, which is you call that past में हो गया, लेकिन वो present को touch करता है. So we can say that so I am not hungry now, यानी कि वो अभी भूखा नहीं है, because he has already taken his breakfast little while ago, यानी कि उसने ब्रेकफास्ट खा लिया है, अब उसे भूख नहीं है. तो that means ये कुछ देर के लिए, ये कुछ समय ये पास्ट हो गया, लेकिन ये प्रेजेंट को टच कर रहा है. That's why we have to written in this form. I have taken my breakfast. Second one, you have seen this movie. There is a person is talking about the movie, that the particular person who is saying something to other persons. You have seen this movie. That one first person is telling something to the second person, and first person already knows about that he has watched the movie. तो उसने पहले ही मूवी देख चुका है. फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को कह रहा है, तो सेकंड पर्सन वो मूवी देख चुका है. तो यू हैव सीन दिस मूवी, तो इसमें क्या है, द थिंग्स हैज बीन कंप्लीटेड ऑलरेडी बट इट समवेयर इट टच द प्रेजेंट. कैसे प्रेजेंट को छू रहा है, जिससे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ. सो यू नीड नॉट सीन इट अगेन, यानी कि उसको वो मूवी देखने का फिर दोबारा जरूरत नहीं है. तो इसीलिए ये क्या है, इट टच द प्रेजेंट. यू कैन से दैट. दैट्स व्हाई वी से दैट इट इज अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. Now, third, the traffic police have closed this road to heavy vehicles. Here, the traffic police have closed this road to heavy vehicles. यानी कि that means that traffic police has already closed the road. Why it is so? Because I think maybe that road is closed for the heavy vehicles, which is not fit for running on that path of heavy vehicles particularly. यानी कि यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस ने वो रोड को बंद कर दिया है, अब पूरी तरह से बंद कर दिया है, विच इज पहले से ही वो थोड़ी देर पहले, या यू कैन से कुछ दिनों पहले ही वो कर दिया गया है. सो हेयर ये प्रेजेंट को टच कर रहा है. कैसे?
सो हैवी व्हीकल्स कैन नॉट मूव अलोंग दिस रोड नाउ। इसका ये मतलब होता है कि अब ये हैवी व्हीकल्स उसमें चल नहीं सकता है, उसमें दौड़ा नहीं सकते। तो ये प्रेजेंट को टच कर रहा है। तो दैट्स वाई it is written, it is also used to express an action completed sometimes in the past but linked with the present। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं, दैट्स वाई इधर पे ऑलरेडी सेवरल एग्जांपल्स आर टेलिंग अबाउट दैट। आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट सो आई एम नॉट हंग्री नाउ। उसने ब्रेकफास्ट ले लिया और उसको ब्रेकफास्ट अब खाने की जरूरत नहीं है। सो समवेयर इट इज टच्ड to the present। That's why we can say that these all several examples are related with this with this points, that is to express an action completed sometimes in the past but linked with the present। Now we have simple past or present perfect। There is a question why it is so, let me clear you through these statements। The simple past tense express a completed action not connected with a present। The present perfect tense express a completed action connected with the present। Present perfect tense express a completed action। So the simple past tense express a completed action not connected with the present। simple past जो है, whatever the action has been done in a past, it is no connected with a present। at present it is not connected with a present। so जो भी simple past सेंटेंस है, जो भी सिंपल पास्ट एक्शन जो सिंपल पास्ट में बीते हुए पास्ट में हो गया है, वो प्रेजेंट के साथ कनेक्ट नहीं होता है। वेयर एज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, वो एक्शन जो कंप्लीट हो चुका है ना, लिटिल वाइल अगो, तो वो प्रेजेंट को टच करके प्रेजेंट टेंस के साथ वो यानी कि प्रेजेंट को वो दर्शा सकता है। It can express at present whatever the action little while ago it has been completed। So let us look some of the example here। I have met him yesterday। I have met him yesterday। So there is a condition already I mentioned and according to that condition, इस condition के अनुसार यहाँ पर एक sentence है I have met him yesterday। यहाँ पे जो yesterday वर्ड है, ये जो yesterday है, ये denoting past tense को denote कर रहा है, ये past को, it is denoting towards the past, यानी कि past tense को ये बता रहा है, यानी कि past को बता रहा है बीते हुए, यानी कि yesterday is denoting to the past। and while have met, this one have met is denoting to the present perfect tense। this one is present perfect, this one is present perfect tense और ये present perfect tense को दर्शा रहा है। why it is wrong, this statement is wrong। why it is wrong I will tell you later on। let me tell you about the same sentence related with another one which I have written here। I have met him। अब यही सेंटेंस को मैंने दूसरे फॉर्म में yesterday को हटा दिया, I just removed the yesterday। I have met him, only that much, I have met him। we can write this sentence in this form also। I have met him, और इस सेंटेंस को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं I met him yesterday। I met him yesterday। these both sentence are correct but these sentence are not correct। why it is so? because simple past never touch to the present। so in the note I have written, in order to make you understand more, we should not use any time expression denoting past
टाइम विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम लोग किसी भी टाइम को, एनी टाइम एक्सप्रेशन, जो भी टाइम को हम लोग किसी सेंटेंस में एक्सप्रेस करते हैं पास्ट टाइम को, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ जुड़ता है। तो ये देखिए यहाँ पे यू कैन सी दैट ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसके साथ जो टाइम डिनोट्स किया गया है दैट इज पास्ट। ये पास्ट टाइम को डिनोट्स किया है, दैट्स व्हाई इट नेवर कनेक्टेड। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ पास्ट टाइम कैन नॉट बी कनेक्टेड, इसके साथ ये जुड़ नहीं सकता है। तो दैट्स व्हाई इट इज इनकरेक्ट। और यू कैन राइट इन दिस फॉर्म, आइदर इन दिस फॉर्म और इन दैट फॉर्म। इस फॉर्म में या इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज करेक्ट। हियर more to explain you that in a diagram you can see that simple past, here is past and here is and there is present. These both never get connected to each other. Past and present not linked, and whereas present perfect it can be linked. Past connected with a present, so past and present can be linked. That's why I have met him. That means little while ago it is the things that has already done. That's why it is linked with the present. I hope that you understood this chapter, this topic, and there is some of related questions in your book. I hope that you will that try to make that related topic which we had discussed. See you in the next video. Till then, goodbye.